So I'll create a new file, Python file. So new and Python file, and I will call it as loops. Okay, enter. Fine. So initially we will go with the while loop. Okay, while loop. Now while loop acts as a normal for loop in other programming languages. Okay, बाकी के programming languages में आप जैसे देखोगे for loop उसी तरह से while loop भी work करती है. So it has three parts. Okay, first is initialization. Okay, you have to initialize a value, okay, variable. Then we need to have a decision statement. और ये decision या condition अगर आप कहो, अगर ये condition या decision true है तो ही वो loop के अंदर जाएगा. Basically loop means iteration of a particular logic multiple times based on the decision or condition. So decision and condition we will have, and then increment or decrement part. Increment or decrement part. तो ये तीन चीजों से आपका loop जो है it is created. So let's understand this, okay, one by one, step by step. So I will say I equals 1. ये मेरा initialization part हो गया. Okay, I will call it as initialization part. This is initialization. I is equal to 1. Then I will say while, okay, while is a loop, okay, and then I will say I less than equal to 10, or let's go with 5. Okay, while I is less than equal to 5. What I need to do, I just need to print the value of I. I will just print the value of I. Okay, and then I need to increment value of I as well. So I is equal to I plus 1. I'm incrementing by one value. Okay, अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करते सो आई की वैल्यू तो 1 है. ओके, और ये 1 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू रहेगी. तो क्या होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. अगर हम ये पोर्शन नहीं लिखते, लेट्स से ये पोर्शन नहीं लिखते, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी, है ना. वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो ये प्रिंट करता रहेगा. तो हमारे केस में तो कंडीशन ट्रू ही रहेगी क्योंकि 1 वैल्यू है, चेंज ही नहीं कर रहे आई की वैल्यू. तो अगर आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये प्रिंट ही करता जाएगा. सो देन लूप्स बिकम्स इन्फिनाइट लूप, है ना. इन्फिनाइट, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, राइट. बट देन इफ यू वांट टू स्टॉप एट अ पर्टिकुलर कंडीशन या फिर एक पर्टिकुलर लिमिट पे, तो यहाँ पे फिर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. सो दिस मीन्स कि हम आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो पहले आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 4 एंड देन 5, और फिर 5 तक तो चलेगा 5 क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू लिखा है. जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स. ओके, और फिर वो बाहर निकल जाएगा. ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट करके, प्रिंट while loop finished. ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन हटा दिया है. ये जो है प्रिंट और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये इंडेंटेशन में है. वाइल जहाँ से स्टार्ट किया था उससे यहाँ पे इंडेंटेशन है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों वाइल के पार्ट है. बट जैसे मैंने प्रिंट यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स कि ये जो है दिस लाइन इज नॉट पार्ट ऑफ वाइल लूप. ओके, दैट इज important. Indentation is important in Python. Okay, let's run this program, and you can see 1 2 3 4 5, up till 5 it is printing, and then you are getting message as while loop finished. Okay, clear guys, up till this part understood? So how while loop works? Yes. Yes. Fine, fine, fine. Now we'll understand about for loop. Okay, we'll understand about for loop. So let's go with for loop. A for loop generally is used in case of Python, okay, for iterating over a list, set, okay, tuple,
We have already understood about list set tuple, okay? So if you want to iterate over a list, then we can go for for loop. So let's go for loop. Okay, for loop. And what I will do, I will create a list. Okay, so I will say L1. Okay, L1 is equal to. So we have to create a list by using square brackets, right? So I will say in single quotes, I will say best. Okay, and then single quotes best, and then single quotes best. Okay, and then again crest. Okay, something like this. Just random data I'm entering. Now, if I want to iterate over these values one by one, okay, then I can use for loop. Okay, so what I will say for, okay, for L, I can take any value. Okay, I can take any value. I am just taking L because it is a list. Okay, so for L in L1, okay, for L in L1. So for each value of L1 will be coming in L and it will be displaying. Okay, it will be printing. I am printing the value of L. So what this will do for each value of L1, that is list 1. So rest will be coming in L, then entering inside this loop, it will print the value of L. That is rest. Again, it will iterate to the next best. Best will come to L, then print. So it will keep on iterating till the list values are there. Yeah, Harshil, tell me. तो ये जो फॉर लूप लिखा ना आपने वो समझ में नहीं आया फॉर इन हाँ, तो हमने इन का हमने देखा था, राइट? इन हमने किस में देखा था? ऑपरेटर्स में देखा था हमने। दिस है ना, बनाना इन, दिस इज हाँ मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट? इट रिटर्न्स ट्रू हाँ इफ अ सीक्वेंस विद दिस, है ना? तो ये सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अगर लिस्ट है, हमारे पास एक लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज है, तो हाँ हमें एक एक करके वैल्यूज को इटरेट करना है। इटरेट करना है मतलब वन बाय वन आगे बढ़ते जाना है और रिट्राइव करते जाना है। तो जैसे लिस्ट इनिशियलाइज होगा तो यहाँ से इनिशियलाइज होगा, राइट? तो ये जो वैल्यू है रेस्ट, वो वैल्यू एल में जाएगी। ओके, तो वैल्यू है मतलब उसके अंदर, राइट? लिस्ट में वैल्यू है, एम्प्टी नहीं है लिस्ट। तो वैल्यू एल में आई, अगर वैल्यू आई हाँ तो फिर वो अंदर जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। फिर वो अगेन तो इटरेट कर। तो ऑलवेज तो ऑलवेज फॉर लूप में हमें हाँ इन ही लेना है हाँ हाँ, इन्हीं लेना है आपको। जब भी आपको अच्छा वन बाय वन वैल्यूज को इटरेट करना है ना, लिस्ट में, सेट में, टपल में, तो आपको इन लेना हाँ है। ओके ओके, दैट वे। इसको रन करके देख लो तो ज्यादा आइडिया आएगा। और एक साथ करना हो तो एक साथ तो फिर आप प्रिंट एल1 ही कर दो। प्रिंट ओके ओके एल1 कर दो, राइट? हाँ तो हाँ वो राइट पूरी सब एक साथ ही प्रिंट हो जाएगी। ये सब एक साथ प्रिंट हो गए। जबकि वन बाय वन करना है तो रेस्ट प्रिंट हुई, फिर बेस्ट, फिर टेस्ट, फिर रेस्ट। ये वन बाय वन प्रिंट हुई। ओके तो ये कितनी बार, 5 बार चली? चार बार, सॉरी, है ना? 4 बार चली, 4 बार वैल्यू। तो इस तरह हाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में अगर स्ट्रिंग है, राइट? जस्ट यस सर, फर्स्ट टेल मी। Run doing exactly what you're doing, but it's not running the test for me. It's not running the. Test like you know how is like result is like rest best test crest. That's not coming up for me. So yeah, we have these four values in list. Okay, rest, best, test, crest. So if I want to iterate over the list, मुझे list में से एक एक value को fetch करना है। If I want to retrieve values one by one from the list, in that case I have to go for loop. So I'm saying for L, this is a temporary variable L. So for L in L1, okay, so the very first value will be retrieved and it will be coming to L, and then it will be printing. So it's printing rest, first value. Then it will go to the best, okay, best will be retrieved in L and then printing. So if there is a value, okay, if there is a value in list, it will be retrieved or fetched and then it will be printing. Okay,
Just see another example. Okay, just see another example. So I will say for x in, and I will pass a string. Okay, I will say Python. This is a string, right? This is a string, and I will say print x. So what it should print? What it should print, guys? Just think over it. So this is a string. Now string of characters. Okay, string is nothing but string of characters. One. So what I'm trying to achieve, I will achieve. I'm fetching out or retrieving one character at a time. So P will be retrieved and stored in X, and then I'm printing. Then Y will be retrieved, stored in X, printing. That way. See, let me run this. So you can see Python. One by one characters are retrieved and printed. Understood? So for is a different way of iterating the values of. So we have to use for if you want to iterate over a list. Okay, अगर आपको list में, set में, tuple में, string में one by one values को fetch करना है, retrieve करना है, तब आप for loop use करोगे. Generally Java, C Sharp में अलग पैटर्न होता है for का, जो हमने ऑलरेडी while में देखा. जनरली while का जो केस होता है ना, वो फॉर में होता है. यहाँ पे फॉर थोड़ा सा डिफरेंट है. फॉर यहाँ पे एक एक वैल्यू को रिट्राइव करेगा, वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, कुछ भी हो. ओके, say for example I'll take a tuple. Okay, I'll say tuple. So I'll say t1. Okay, t1 tuple 1 is equal to tuple कैसे होगा, this way. Okay, so I'll be say 1 comma 2 comma 3 comma 4. Okay, something like this. So what I need to write for t in t1. Okay, something like this, and I will say print entity take out. It will take out one by one values. Okay, from the tuple. So 1 2 3 4. See, all the values are fetched from tuple. Got it? But if you want to iterate like this, okay, while loop की तरह अगर आपको iteration करना है in a particular format, okay, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे एक रेंज फंक्शन है, रेंज का यूज करेंगे. रेंज का मैं आपको अभी दूसरे सेक्शन में बताता हूँ. अभी आप ऐसा समझो कि वैल्यूज करके एक मेरे पास वेरिएबल है, तो वैल्यूज इज इक्वल टू रेंज एंड देन आई एम सेइंग 4. तो ये क्या रेंज देगा, 0 1 2 3 एंड या 3 up till 3. Okay, 0 1 2 3. So these four values are stored as part of values. Okay. Now I'll say for I in values. Okay, values, and then colon, and then I'll say print I. Okay, this way. So अब ये क्या प्रिंट करना चाहिए, वैल्यूज में क्या स्टोर्ड है, बेसिकली 0 1 2 3. तो ये 4 बार चलेगा. It will run for 4 times. Okay, 0 1 2 3, that is 4 times. So each value will be retrieved and stored in I, and then I'm printing. Okay, so let's run this. See, 0 1 2 3, this one. मतलब हम रेंज में जो लिखेंगे वो ऑटोमेटिक 0 से काउंट होगा. 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा रेंज. ओके, और रेंज में हमने 4 दिया ना, तो 4 minus 1 is 3. 3. तो 3 तक चलेगा, जो भी आप दोगे उससे कम, एक कम. ओके ओके. स्टार्ट हमेशा 0 से होगा. ओके. स्टार्ट हमेशा 0 से होगा, और रेंज में जो भी वैल्यू दोगे उससे कम होगा. जैसे मैं 6 देता हूँ एंड इफ एग्जीक्यूट तो 5 तक वर्क हुआ. क्लियर? Understood this part, up to this part, guys? So यस. for is generally basically used for iterating of values. अगर आपको values को fetch करना है या values को iterate करना है, based on the values you want to iterate. अभी से फॉर एग्जांपल मुझे while loop की तरह, while कैसा है कि मेरे पास 1 से 5 यानी टोटल कितने हुए, 5 बार इटरेशन हो रहा है ना. So this is printing 5 times. तो मुझे फॉर लूप में भी सेम करना है कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं,
4 वैल्यूज है, मुझे 4 बार इटरेट करना है, तो मुझे 4 वैल्यूज है तो मुझे 4 बार इटरेट करना है, तो उस केस में मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, आई विल से फॉर एंड देन अंडरस्कोर, ओके अंडरस्कोर इन L1, okay, just observe, okay, and I will say print hi, okay, and you can see another line as well, so print hello, okay, I have to make hi also in case of single quotes, okay. So what I'm trying to do, okay, I want to print this hi and print hello how many times, 4 times, or you can understand in this way, I want to run this particular logic, whatever logic I have just written a print statement, but consider there is a specific logic. So if I want to run this specific logic, okay, how many times, 4 times, whatever be the number of values in list, that many times if I want to run, okay, I just have to use for underscore in whatever list, okay, list 1 set 1 whatever, and then I just want to write the logic. So this will be printed how many times, 4 times. So in this particular example, it's not going to print rest best test, it's going to print hi hello 4 times because there are 4 different values, so it's going to print this 4 times. See, let's see, this hi hello, okay, so this is first instance, okay, second instance, third instance, and this is fourth instance. So 4 times it has printed hi hello. Understood, guys, this part? So if you want to iterate number of times, okay, जितनी values हैं list में उतने number of times अगर आपको iterate करना है तो आपको dash use करना है, लेकिन अगर आपको values fetch करनी है list की, set की, tuple की, okay, अगर आपको values fetch करनी है तो आप फिर एक variable use कर दो और list वन या जो भी लिखना है आपको लिख दो, तो वो एक एक वैल्यू यहाँ पे फेच करके लाएगा और वो प्रिंट करना है प्रिंट करो, जो भी एक्शन या ऑपरेशन करना है कर सकते हो। लेकिन अगर लिस्ट सेट या टपल में जितनी वैल्यूज है उतनी टाइम्स आपको एक पर्टिकुलर लॉजिक रन करना है तो आप अंडरस्कोर यूज कर दो, ओके दैट या हर्षिल टेल मी। सर अंडरस्कोर एंड वेरिएबल का जो डिफरेंस होता है वो फिर से एक बार बताओ ना। श्योर श्योर, देखो जब भी आपको लिस्ट सेट या टपल की जो वैल्यूज हैं वो वन बाय वन रिट्राइव करनी है और उन्हें प्रिंट करना है या फिर उन पे कैलकुलेशन करना है वैल्यूज पे, तो आप एक वेरिएबल ले लो, ओके, और अगर आपको तो वेरिएबल ले लिया फिर आप प्रिंट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो उन वैल्यूज पे, ठीक है। लेकिन जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे अभी फिलहाल हमारे पास लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 4, तो मुझे अगर 4 मुझे उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी लूप को इटरेट करना है या लॉजिक को इटरेट करना है तो मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा, तो आई विल से फॉर अंडरस्कोर इन लिस्ट वन एंड आई विल राइट सम लॉजिक, so whatever is highlighted this logic will be iterated for that many number of times, okay, जितनी आपके पास वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, तो ये 4 बार आपको प्रिंट करके देगा। अंडरस्कोर का अब 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 अभी अब अभी 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 भी थोड़ा डाउट है। ओके सॉरी, चलो देखो इसमें कैसा होता है, अंडरस्कोर कब यूज करना है, जब आपको इसमें अभी कितने फिलहाल नंबर्स हैं, टोटल 4 चार। नंबर्स, 4, हाँ तो मुझे ये जो लॉजिक है 4 बार रन करना है, हाँ तो मुझे अंडरस्कोर लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल देता हूँ ए या फिर जो भी है, ओके आई विल से ए, तो फिर वो ये लॉजिक उस हिसाब से रन नहीं करेगा, है ना, वो क्या करेगा, वो एक एक वैल्यू लाएगा एक में और फिर वो ए को प्रिंट करना चाहेगा, तो अगर मुझे ओके उतने नंबर ऑफ टाइम्स करना है तो मुझे अंडरस्कोर देना है, ओके okay? ओके। सो फॉर का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से, अगर आप जावा या दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, क्लियर दिस पार्ट, अंडरस्टूड, हाँ चलो
इसी में रेंज हम लोग देख लेते हैं रेंज का एग्जांपल। और जैसे यहाँ पे रेंज हमने दिया है सिर्फ 6 दिया है, यहाँ पे 4 दे देते हैं हम लोग। अभी फिर से चलो, अब यहाँ पे रेंज में मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू दी थी, अब मैं वैल्यूज देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ओके, आई विल से I can directly write also. Okay, I can say for I in, okay, range, okay, range 2 comma 6. Okay, it's something like this. I'm giving this here. So print and then print I. Okay, print I. So what it says कि भाई start from 2. Okay, because I'm giving a starting point. तो आई एम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो वो डिफॉल्ट 0 ले लेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 2, तो ये प्रिंट क्या करेगा, सबसे पहले 2 प्रिंट करेगा। ओके, और एंडिंग पॉइंट मैंने क्या दिया है 6, तो 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, तो 5 तक चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था 4 माइनस 1 3, तो 0 से लेकर 3 तक गया। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 2, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से स्टार्ट होगा। और एंड पॉइंट क्या होगा, तो जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है एंड पॉइंट, उससे एक कम। ओके, उससे एक कम। तो इसको रन करो, सो यू कैन सी 2 3 4 5, 5 तक आपकी वैल्यूज प्रिंट होगी। आइडिया? ओके, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि फ्रॉम दिस, ओके, दिस लूप विल इटरेट हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स logic will be iterated. Okay, logic will be iterated 4 times. So this is our logic, right? Currently it's a simple print statement. Whatever number of lines we write inside for loop, okay, that will be iterated 4 times. Why? Because it is starting from 2 and iterating up till 5, number 5. So 2 3 4 5. Now this is sequential iteration, one value 2 3 4, one value at a time. Okay, increment by 1. What if we want to increment by some another value? Say for example, I'll say for I in, okay, range, okay, and I want to start from 1. Okay, I want to start from 1. It should iterate up till 20 20 चलो 21 देना पड़ेगा, तो 20 तक iterate करना चाहिए, है ना, क्योंकि 21 दिया है तो एक कम, 21 से एक कम, तो 20 तक iterate होगा starting from 1. But then what I want that iteration should be incremented by 3, 3 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, ना कि 1 से। तो मैं लास्ट में फिर 3 दूंगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ करूंगा प्रिंट आई। ओके, सॉरी, प्रिंट आई। अब ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर 1 के बाद 3 इंक्रीमेंट आएगा, तो 1 2 3। ओके, इट शुड बी 4। So see, 1 and then 3 increment by 3, so it's 4. Again increment by 3, 7. Again increment by 3, 10. Again increment by 3, 13, 16 and 19, up till 19, something like this. Getting understanding of this range, how to use range in case of for loop, Yes, sir. right? So this is how you can use for loops. Okay. सर ये थ्री का यूज मेंशन कर दो ना। Sure. I'll say 1 is the starting point. Okay. 1 is the starting point. Okay. Then 21. So 21 minus 1. Okay, is the ending point. End point. Okay. And 3 is increment. Increment by 3. Over here. Okay. Over here, it's 2 starting point. Start point. Okay. And 6 minus End 1, okay, that is 5. Okay, that is end point. Okay, end point. And increment by 1, default is increment by 1. Default is increment by 1.
And over here, if you don't give any starting point, so okay, 4 will be taken as an endpoint. So 4 minus 1, that is 3, is your endpoint. Default starting point is 0. Okay, if not provided. If you don't provide any starting point, okay, then 0 will be taken as a starting point. Okay, hope this is clear, guys. Understood this for loop. So if you want to iterate n number of times, okay, you can use this range function directly over here. You can use. Okay. And if you want to start from some specific value up till a specific value, that also you can mention. Increment by some specific number of times. Okay, that also you can mention. So this is for. So for can be used in this way also, iterating for a specific number of times and iterating over a particular list, set, or okay, list, set, or a string, okay, tuple. Then you can go for loop also. Okay, so it will fetch one by one all the values from set, list, or tuple. Fine. So this is all about while loop and for loop as part of loops.